कहाँ से जनरेट होती है, where does this is produced within the earth. तो बेसिकली एज यू नो कि जो सबसे पहले जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट जो होता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक भी आता है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से, बिकॉज they produce friction when they diverge or converge, जो भी सिचुएशन होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट अ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड, उसकी वजह से द हीट इज प्रोड्यूस्ड. एंड आल्सो एज यू नो देयर इज अ कंटिन्यूअस decay of the radioactive elements which is present inside the earth. Because of that, heat is generated. And एक point है कि when the heat is generated when the planet is formed or is activated, मतलब when a planet is formed, it is formed, then heat is generated. And thus these three factors they contribute to generation of geothermal energy. अब देखो, दिस इज द वे हाउ जियोथर्मल एनर्जी इज हार्नेस्ड, या हम उसको कैसे पृथ्वी के नीचे से निकाल के यूज करते हैं. सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आई थिंक देयर इज वन मोर डायग्राम. सी, this geothermal energy is basically used in two main ways. Either it is directly used, directly pumped out, or it is indirectly used to generate electricity. तो जब हम इसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, when we are using it directly as it is from the earth, what we do is, see, we have these pipes. There is a previous diagram also, so the same चीज है. See, two pipes, or these are also known as artesian wells, यानी कि artificial wells होते हैं. These pipes are inserted inside the earth, जहाँ पे भी that geothermal source is found, and then cold water is pumped down. Now, because there is heat below at the bottom, this heat then warms up the water and it gets converted into steam and hot water. And then this steam or hot water then comes out, and then यहाँ पे turbine होता है, it rotates the turbine, and thus it produces electricity. तो ये तो है एक तरीका geothermal energy harness करने का. As you can see in this diagram also, see there is because of the bottom layers, magma heat है, rocks की heat है, that is aggregated inside below the earth. So we have these pipes. We put down water through a pipe. The heat we warms up the water, and then it converts into steam and hot water, and then it goes out, it rotates this turbine, and then the electricity is. So this is when we use this geothermal energy directly, either for heating, then is known as directly use, or indirect use तब होता है जब हम इसको convert करते हैं electricity production के लिए. मतलब we have a direct source and then we convert it to alternating source, तब हम इसको indirect use of geothermal energy बोलते हैं. Direct use के कुछ examples हैं, like fish farms, heating for buildings, and we have raising plants in greenhouses, provides these to industrial purposes. ये सब है direct use, जहाँ पे हम directly जैसे ही geothermal को harness करते हैं as it is हम उसको utilize करते हैं. While indirect use में आता है electricity generation. Okay? अब ये कुछ advantages and disadvantages हैं. See, first of all, major जो advantage है geothermal energy का वो यही है कि it is a non-polluting source. So we don't have any pollution created. But इसका एक जो बहुत major disadvantage है वो ये है कि sometimes geothermal energy it produces certain toxic gases like methane and all. उसकी वजह से sometimes it might create some issue. तो ये हो गया आपका geothermal energy. बाकी आप पढ़ लेना advantage. This is a map of India. Basic कहाँ पे geothermal energy पाई जाती है उसका map है. Next we have is ocean thermal energy. ठीक है, इसे OTE बोलते हैं. OTE. अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि what is the source in an ocean that can generate electricity? देखो, ocean के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझ में आता है कि how deep is the ocean. ठीक है, कि कितना deep है या कितना बड़ा है ocean. तो बेसिकली जो लेयर्स का डिफरेंस है, टॉप लेयर एंड द बॉटम लेयर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सरफेस गेट्स हीटेड अप बिकॉज ऑफ द सन, व्हाइल लोअर बॉटम में अगर हम जाएंगे ओशन के, द टेम्परेचर इज वेरी लो. तो दिस लो एंड हाई टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, इसको हम यूज करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. बट इसके लिए
जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द टॉप लेयर एंड द बॉटम लेयर शुड एटलीस्ट बी 25 डिग्री। यहाँ 20 लिखा हुआ है, 20 to 25 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अगर टॉप लेयर का टेम्परेचर 25 है तो बॉटम लेयर का टेम्परेचर एटलीस्ट 5 होना चाहिए। दोनों के बीच का डिफरेंस 20 to 25 के रेंज में फॉलो करना चाहिए। ऑल्सो द ओशन का डेप्थ जो है इट शुड बी एटलीस्ट 1000 मीटर फॉर अ OTEC प्लांट टू वर्क। Now this is a pictured pictorial बोलो जो डिस्क्राइब कर रहा है कि how a OTEP plant works, ocean thermal energy plant works. See, इसमें थोड़ा सा देखो चीजें एडेड होंगी आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक। देखो there are four main components. Component 1 is the evaporator, component 2 is a turbine, component 3 is a condenser, and component 4 is the ammonia pump. So as we know कि top surface और bottom surface के temperature का difference होगा। Obviously bottom में cold water होगा while surface पे warm water होगा। So सबसे पहले हम one पे चलते हैं। One is the evaporator. What happens is the warm sea water it enters this evaporator, and obviously because it is warm and then it is an evaporator, so it will heat that water up. अब जो heat generate होगी that heat will be in form of steam, will run the turbine and then will produce electricity. तो ये एक section है OTEP plant का, wherein the warm water from the surface layers of ocean it gets evaporated, बाष्पीकरण होता है उसका, and then gets converted into steam, and then it runs the turbine, and then electricity is produced. Why? जो भी waste steam है, यानी कि the steam which is not being utilized या not being used, it will actually come towards the condenser after getting lost from the turbine side. It will come to the condenser side. अब condenser का काम क्या है? It condenses. So basically the cold water which is at the bottom of the ocean, it enters this condenser, and what it does is it cools down the steam part. As it cools it down, it gets converted into water and then is returned back to the sea. तो ये तो इसका second section हो गया कि the waste steam it is condensed by the condenser and is ejected out of the system. अब क्वेश्चन आता है कि what is the role of this ammonia pump, the fourth part. देखो अमोनिया जो है उसका एक प्रॉपर्टी है, अमोनिया इज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके, आई गेस माइनस में इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस जैसे ही इट गेट्स in touch with the oxygen, gets in touch with the normal surrounding, it starts burning, it starts getting heated up. So जैसे ही हमने क्या किया, we add ammonia to the pump. Now what happens? This ammonia which is present in the pump, it actually खाता नंबर मोबाइल नंबर से खाता नंबर बताना होगा जैसे तो so this ammonia because of heat in the system it burns out. या इसको तुमने लगा लो catalyst, सबको पता होगा what is the catalyst? It is used to increase the rate of a reaction. ये किसी भी कोई भी चल रहा है, I mean एक reaction चल रहा है, उसको speed up करने के लिए हम catalyst add करते हैं। तो ये अमोनिया भी यहाँ पे इस पंप में एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, wherein this ammonia will actually increase the heat or increase the rate at which the water is getting heated up. तो ये अमोनिया ऑटोमेटिकली बिकॉज इसका एक बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट है, थोड़ी किसी भी हीट कैच करते ही it crystallizes, it like liquidizes and then it releases a lot of heat. उस हीट की वजह से एक एक्सीलरेटेड रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टीम और ज्यादा प्रोड्यूस होती है, टरबाइन जल्दी रोटेट करता है, मोर इलेक्ट्रिसिटी। So this ammonia which is used in a OTEP plant is basically used to increase the rate of the reaction या increase the rate at which electricity is generated. So this is a OTEP plant. इसमें किसी को कुछ पूछना है, समझ में ना आया हो तो मैम एक बार और समझा दीजिए। ओके देखो, जब तुम इस प्लांट को पढ़ोगे तुम्हें बेसिकली इसके 4 पार्ट्स याद रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज हमारा इवेपोरेटर, सेकंड इज टरबाइन, थर्ड इज कंडेंसर एंड फोर्थ इज द पंप। सबसे पहले पार्ट का है इवेपोरेटर। एज अ नेम सेज इवेपोरेटर, यानी कि ये बेसिकली
बेसिकली वाटर को कन्वर्ट करेगा, इवेपोरेट करेगा स्टीम में या वेपर्स। अब दो चीजें देखो, इवेपोरेटर ऊपर लगाया जाता है थोड़ा सा, और कंडेंसर जो होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। मतलब इवेपोरेटर जो है तो इवेपोरेटर जो है व्हाट इट विल डू is because it is taking water from the top surface layers. So top surface layers का water तो वैसे ही थोड़ा सा warm होता है. What will happen is that warm water will enter the evaporator and get heated up. When the water gets heated up, it produces steam. This steam will then run the turbine जो ऊपर बना हुआ है part number 2 and then will produce electricity. तो ये है इसका एक section. Now what will happen is जो waste steam है, the steam that has not been utilized to generate electricity, it will return to the condenser. Condenser को देखोगे तो condenser में नीचे से cold sea water का एक arrow बना हुआ है. So this condenser is basically using the cold water from the bottom layers of ocean. This cold water will actually cool down the steam, and that steam will get converted into water and will be thrown out towards the sea. मतलब उसको हम वापस return कर देंगे sea. Why? यहाँ पे जो